हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और सबसे पहले पूछता हूँ आप सब कैसे हैं। ठीक है। देखिए, कल हमने एक वीडियो किया था, कल ही किया था ना। कल ही क्या ना। हाँ, तो उसमें रवि प्रभु है ना। रवि प्रभु का हमने वीडियो किया था। वो गिलगित बाल्टिस्तान में गए थे। काफ़ी सारे फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं दिया हमको अभी तक कि कौन कौन। नहीं, इंडियन अलाउ नहीं है। इंडियन अलाउ है कि नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इन्होंने अगर ब्लॉगिंग की है तो वो अलाउ है यहाँ पे। और इनका सेकंड पार्ट था जो रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था वीडियो। तो चलिए मिल के देखते हैं, घूम के आते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। तो हमारे साथ में चालू कीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो मनु करो स्टार्ट। हेडफोन लगा लो। Hello all, this is Ravi again. Welcome back to my channel. Vlog number 1 on Gilgit Baltistan covered my route all the way from Islamabad into Skardu, various surroundings of Skardu, and then to Diosai, and we ended the last night in Astore. So this is where we're going to take off, starting from Astore. So this is the place where we spend the night in Astore, amidst beautiful hills of the Gutumsar Valley, and now we have initiated our drive to go to Nagar in Hunza Valley. Gilgit and Hunza, the land of pastures, Astor. Guys, we are at Nanga Parbat. This is the tallest mountain in all of Pakistan. While K2 is the highest mountain in Pakistan and the second highest peak in the world, it is higher from the sea level. But Nanga Parbat is the tallest mountain because it's from the base that you can see to the top. So that is Nanga Parbat. Check this out. ओ आसमान में जी हाँ, करें। The stretch of 16 kilometers between Raikot and the Fairy Meadows base camp near the village of Tato is one of the most dangerous roads in the world. It's quite treacherous, at the same time very exciting and thrilling to ride on that particular trek. पैदल चलना सेफ है। So this point is super special. It is the junction of 3 mountain ranges, the Himachal, Karakoram and the Hindu Kush. Check this out. ओके, 3 largest huge mountain ranges meeting point, and this is the beautiful Indus River. I think the Astor River joins the Indus River here, so this is a distributary of Indus, and we can see the Indus River right here. And then we continued on the Karakoram highway towards Nagar. Met many friendly locals on the way to Rakaposhi. Guys, at the Rakaposhi viewpoint, this mountain is 7,788 meters tall, and then this has the steepest fall, meaning no interruptions, the biggest facade in the world. We spent a few hours at the Rakaposhi and it was lunchtime, so we went to the outskirts of Nagar. And then we ended up in a beautiful place full of apple orchards, lots of cherry and apricot trees. Alright, here is the Hindustani guy from India having lunch with a bunch of Pakistanis. It's a stone pot. And what is it, sir? Gurkan. What's the speciality of this one? Chicken gurkan. Gurkan. This is the traditional dish of Nagar. And the name of the dish is gurkan, and it is specially cooked in this stone pot. Yeah. So according to them, it has its own taste and a different taste because of this pot. And this is Mr. Zakir, I'm starting. who has done so everything hungry, except so- one thing. And this is Mustafa. Another Mustafa, right? Yeah. Azralabai. Apple orchards all over. And then some cherry trees, some apricot trees. And some hot tea to conclude our leisurely lunch. And then we set out to explore Nagar. And then we stopped by the old Silk Road, which extended all the way from China
through Europe, and this was a very busy trading route in medieval times. अच्छा ये It was Muharram season, and we drove into the villages of Nagar. Month of Muharram, in honor of Hussein, who got people to distribute everybody is dressed in black. The majority of the villages are Shiite dominated, and we drove through a number of villages. Nagar, look at these beautiful kids. Naam boliye? Disha. Up. Sharamat. Bye-bye. No bye-bye, no bye-bye, come on. We are looking at Hunza, and the deep gorge is where the Indus River is. And check this out, the mountain cliffs, something like in Iran or Turkey. And many houses at the edges of the mountain cliff looked amazing. We continued driving to get to the Diran Peak and the Hopper Glacier. And then this is the Hopper Glacier. I was told that this is the fastest melting or the fastest moving glacier. This is in the midst of a little village which is 100% Shiite. Shopping for some authentic cashmere and woolen shawls here in a remote village in Nagar municipality. And this bhai is our bhai right now, the seller. There you go. Having accomplished a number of things that day, we spent the evening in beautiful Karimabad and spent the night in a local hotel. We are in Karimabad, and this is the view I wake up to in the Hunza Valley. Check this out. Amidst the mountains, little tinge of greenery, and the brown mountains as well. And breakfast with brothers before we head out to the Kunjara Pass. And that's the view. So what we are looking at is the Baltit Fort, which is 700 years old. So this was built by an architect from Skardu when the princess of Skardu married the prince of Hunza. And check the background out. How amazing is this? And then the last part of our trip in Gilgit Baltistan to Kunjara Pass, which is the border of Pakistan with China. We continued our drive along the Karakoram Highway, which is also referred to as the 8th wonder of the world, as it's the highest paved road in the world. It extends all the way from Punjab to the border of China and continues into China. Indian guy, Pakistani guys. Sabri sir. Awesome time. Wow, man. This is breathtaking. Such a beautiful first sight of Lake Atabad. A beautiful view of the Atabad Lake. Can you believe this lake was created by a landslide? When a huge landslide occurred and it blocked the river, cut off the stream, then all the sediments were deposited underneath, and then the water rose up and retained this beautiful color. Quite beautiful it is. And then back on the Karakoram highway to get to Pasu. Pasu is really famous for Pasu cones, which are nothing but jagged peaks with beautiful rock art. Check the glacier out. Tea at the border of Pakistan and China. There is
border police, Yeah, sure. and he's hosting us. And Imran Khan lookalike. Oh, sorry, he's the son of the mountaineer that climbed both Mount Everest and K2 without an oxygen tank. Hats off, sir. Mountain cows very close to the China border. We are at high altitude now. Beautiful, yeah. So we reached the Pakistan border. And now approaching the actual gate between Pakistan and China. Kunjara Pass happens to be the highest point of the Karakoram highway, and this is also the world's highest paved border crossing. And we reached the end, the border end of Pakistan. We are at the China border. That is the Kunjara Pass, guys. Incredible. So truck is crossing from China into Pakistan. And then a leisurely drive back to Lake Atabad and then Gilgit. Our lunch location, Atabad Lake. Just relaxing. I had a tough day driving all around. Namaste, India. And then late lunch at Hunza Bites right on the Atabad Lake, which served really delicious food. I strongly recommend it. And then we continued on to Gilgit to spend the night. कंट्री मतलब इतनी जगह यहाँ पे घूम गए हैं। सही, ये सबसे प्यारा लगा विजिट गिलगित बाल्टिस्तान। बिल्कुल हाँ मनो, से समथिंग। क्या बोलूँ, वीडियो के बारे में तो बढ़िया बढ़िया जगह, प्यारी प्यारी। प्यारी प्यारी, हाँ प्यारी प्यारी। और जा सकते हैं अपन भी, है ना। अब वो गए तो अपन भी जा सकते हैं, पर कंडीशन क्या है ये पता नहीं है। अब कंडीशन तो अब वहाँ अपन कुछ पता करें जाके तो ही पता चले, है ना। वहाँ जाके तो पता कर तू चल, पहले मैं आया। क्योंकि जगह काफ़ी प्यारी है और काफ़ी सारे फ्रेंड ने बोला कि हम अलाउ नहीं है, और पता नहीं बोल रहे सिक्योरिटी रीज़न है। अब होता है जब दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होती है तो आपस में लोग ही सफ़र करते हैं, वही सफ़र करते हैं, और ऐसी जगह आना जाना होता नहीं है, आते जाते नहीं है। अगर इंडिया से कोई पाकिस्तान में जाएगा तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कोई स्पाई तो नहीं है, जासूस तो नहीं है, ऐसा वैसा, यही चीज़ देखी जाती है सबसे पहले। इसलिए प्रॉब्लम है। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जब आपस में प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई भी आओ कोई भी जाओ, टूरिस्ट का वेलकम होता है ना। हॉस्पिटैलिटी नंबर 1, कल एक वीडियो किया था। और दोनों कंट्री इस मामले में नंबर 1 है, पर एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी करने में प्रॉब्लम है, सियासती राजनीति, वही दिक्कत है ना, पॉलिटिकल इशू। तो होप सो अपन भी कभी जा पाए। और उन्होंने सेकंड पार्ट में भी काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में बताया, और वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर तक गए, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है ना। साथ में उन्होंने खाना खाया, पल खाए, और एक फ्रेंडली, और वो सबसे मोमेंट अच्छा लगा मुझे गाड़ी के अंदर कार में। हाँ, एक प्यार का नगमा है वो गाना सुनते हुए, तो अच्छा है। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने पूरा सेकंड पार्ट इसका कर लिया है। काफ़ी ऊंची माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पे, और ग्लेशियर, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सब कुछ। देखिए हमने बिल्कुल देखा ही नहीं, हम तो इंडिया के नॉर्दर्न साइड में भी नहीं गए। तू तो गया ना? हाँ गया ना, शिमला तक तो गया ना। तो तूने तो बर्फ़ तो देखी है ना? हाँ, मैंने तो वो भी नहीं देखी है। हाँ मैंने रेत देखी है राजस्थान में, समुंदर देखा है, और माउंटेन में अपने माउंटेन ही देखे अपन ने, अरावली वाले, ऐसे माउंटेन नहीं देखे। तो इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है। अभी कोरोना में जब थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ था तो पंजाब से सीधी ये हिमालयन रेंज दिख रही थी, क्योंकि पहाड़ इतने ऊपर है कि आप 30-45 किलोमीटर दूर से देखोगे तो भी वो दिखेंगे आपको, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है हिमालय की।
तो ये दिखे थे लोगों, मतलब लोग कहते थे कि पहले यहाँ से दिखते थे, फिर पोल्यूशन इतना हो गया कि दिखते नहीं है, पर जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद ठप पड़ गया, तो हवा साफ़ हुई तो लोगों को वो भी दिखने शुरू हुए। मैंने न्यूज़ में देखा था, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। हमने तो अभी ऐसे ही देखा है, अब रियलिटी में कब देखेंगे पता नहीं, बाकी होप सो, उम्मीद है कभी आएंगे यहाँ पे, और आएंगे तो आपका वेलकम होगा, हमें ये भी पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन लोगों को होती है जो चाहते नहीं है कि कंट्री में सब कुछ सही हो, वो उस तरह के लोग दोनों तरफ होते हैं। अब इस तरह के लोगों को ही हमें समझाना है और कुछ नहीं करना है। और इसके लिए एजुकेशन मस्ट है। नफ़रत भरी जो एजुकेशन होती है, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जाने अनजाने में, या फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चे, हम बच्चों को बोलते हैं चोरी मत करो, पर वो हमें ऑब्ज़र्व करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनके मुँह में बोलते हैं झूठ मत बोलो, तो वो झूठ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो हम क्या कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सब सीखते हैं। कच्चे घड़े को अपन डाल सकते हैं, और पक्का बन जाने के बाद उनमें चेंजेस नहीं आते हैं ना। तो नफरतें इसी तरह से ख़त्म करनी है हमें। तो होप्स हो कि आने वाले टाइम में हम क्या, बहुत सारे लोग आएँ और सब साथ में घूमें। देखिए होता ही है कि ऐसी जगह, खूबसूरत जगह पे लोग जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको पैसा मिलता है, और डेवलपमेंट होता है। ऐसी जगह अगर रोड कनेक्टिविटी एक दिन के लिए बंद हो जाए और यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ खर्चा करती है जहाँ उनको प्रॉफिट होता है, तो यहाँ के लोगों को मेडिकल सिचुएशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, मैं वो सोच रहा हूँ। तो डेवलपमेंट ज़रूरी है। ज़्यादा डेवलपमेंट भी, जब नेचर को हम हार्म करने लग जाते हैं तो उस समय गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैनेज करती है, पर जहाँ लोग ही नहीं जाए, बहुत कम जाए, तो मेरे हिसाब से इंडियन भी एज ए टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कल्चर एक है ना। अब कन्वर्जेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, अगर बाहर का कोई आएगा तो प्रॉब्लम आती है, लोग सीधे जुड़ जाएंगे, जैसे आप और हम जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, और सबको प्यार दीजिए और सबसे प्यार लीजिए। यही है दुनिया, इसी पर टिकी हुई है। तो इसी मैसेज के साथ वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को कुछ नहीं करना है, छोटा सा कनेक्शन लेना है, फ्री वाला, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।